हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज एकादशी का दिन है और आज ही के दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कृष्णा कॉन्शियस रियलाइजेशंस की सीरीज। तो ये स्टार्ट करने का बेसिकली पर्पस क्या है वो मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगी और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम बहुत दिनों से साधना अपडेट वाले ग्रुप में अपनी साधना अपडेट कर रहे हैं। तो फिर हमने प्रभु जी को अपडेट किया था, महीने में एक बार अपडेट करते कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि प्रीचर्स को लाइक दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो डिवोटीज हैं, वो अपनी साधना करते हैं बट दूसरों को प्रीच नहीं करते हैं। और एक होते हैं प्रीचर्स जो अपनी साधना भी अच्छी करती है और दूसरों को भी प्रीच करते हैं। तो हमें उस लेवल तक बनना है। और इसके ऊपर आते हैं लीडर्स जो कि लीड करते हैं टीचर्स को। फिर लीडर्स के भी ऊपर आते हैं उनके गुरु, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, जो एक विजन देते हैं। तो हमें क्या बनना है, हमें अभी टीचर्स बनना है और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो भी साधना कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें और साथ में दूसरों को भी टीच करें। तो उसके लिए हमने पूछा था प्रभु जी से कि इसके लिए तो हमारी साधना भी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके लिए आप अच्छे से जपा कर सकते हैं और रोज श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हमें सुनने चाहिए। तो इसलिए फिर हमने ये स्टार्ट किया है राधिका आश्रय। तो इसकी कुछ कैटेगरीज है, कुछ इसमें पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं कि हमें रोज 12 से 16 माला जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का और रोज श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने हैं। तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम ग्रुप पे शेयर करते हैं और इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने डिवोटीज जो सुन रहे हैं उसको नोट्स भी शेयर करें। और थर्ड है रीडिंग। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब कृष्णा कॉन्शियस सीरीज वाली खत्म होगी तब रीडिंग वाला शुरू होगा। और जिस तरह से अभी आप लोग अपनी रियलाइजेशन शेयर करेंगे उसके बाद में हर रोज एक एक डिवोटी बुक्स को लीड करेंगे, तो ताकि कोई बोर भी ना हो और सबको बोलने का मौका मिले। तो बुक उसको दे दी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो वो डिवोटी रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जैसे उनकी इच्छा है वैसे वो पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करवाएंगे। और थर्ड है कि हमारी पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी बाहर के प्रभु जी या माता जी आते हैं तो हम उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। और हम जैसे लोग पूछते हैं स्टडीज को कैसे बैलेंस करें। तो इसलिए प्रभु जी ने ये कैटेगरी भी डाली है कि अपनी साधना भी मेंटेन करें और अपनी स्टडीज को भी अच्छे से मेंटेन करें, यानी कि हमारा स्कोर पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। और आगे जाके कुछ कैटेगरीज और ऐड होंगी। तो फिलहाल हम अब थोड़ा सा लेवल अप जा रहे हैं। तो ये 3 चीजें तो हमें डेली करनी है और इसकी प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन होगी और वीकली सबको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। तो जो वीकली जिनकी 100% अटेंडेंस होगी, तीनों में अच्छे से जपा हो रहा है 12 से 16 वाला के बीच में, और रोज हियरिंग के साथ नोट्स भेजे जा रहे हैं, रोज रीडिंग हो रही है मिनिमम आधा घंटा या 15 मिनट्स। तो ये पूरी, फिर उसके बाद में एकादशी को प्रभु जी को हम ये सेंड करेंगे। तो आज हम कृष्णा कॉन्शियस रियलाइजेशन की सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये साल अब खत्म होने वाला है। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो नया साल शुरू होता है गौर पूर्णिमा के दिन से, जिस दिन श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं या जिस दिन उनका आविर्भाव होता है। लेकिन सो कॉल न्यू ईयर के लिए हम इस साल को एंड करने से पहले कुछ अपनी पुरानी इस साल के जो हमारे रियलाइजेशंस थे कि कैसे कृष्णा ने हमारे साथ रेसिप्रोकेट किया। क्योंकि भगवान हमारा जो हर दिन होता है वो एकादशी है, या हर दिन हमारे लिए न्यू ईयर है, क्योंकि हर दिन भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उन सारे दिनों को या उन सारे स्पेशल मोमेंट्स को साथ में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो हम आज सुनेंगे अलग अलग डिवोटीज से। तो ये पूरा वीक जितनी भी हमारी डिवोटीज हैं राधिका आश्रय ग्रुप में, तो उनसे हम सुनेंगे। तो आज पहला जो 2 डिवोटीज हमारे साथ शेयर करेंगे वो है हर्षिता माता जी और मोहिता माता जी।
तो ये दोनों माताजी बहुत सिंसियर हैं और 16 माला जब रेगुलरली करते हैं। और हर्षिता माताजी जॉब करते हैं और मोहिता माताजी सेकेंड ईयर में। तो बहुत ही अच्छे डिवोटीज हैं और बहुत इंस्पायरिंग है। तो थोड़ा और जानने के लिए हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। हर्षिता माताजी, यू मे टेक ओवर। Hare Krishna. Thank you so much, Anma Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Okay, let's start with the Mahamantra. Sorry for my tiring voice because I just came from office. So please pardon. So yeah, let's start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. So thank you so much. Thank you everyone. Thank you to Prabhutis and all of you for having these efforts to put in to have this group and platform where we all can have these realizations in our life, from our life, to teach others, to preach others, and to improve in our own Krishna consciousness. So for me and Mohita, it was like since some of you might know, some may not, but we have lost our mother in January 19, 2017. So it's been like for this year, it's like 5 years for her, for us to lose her. So after that, we have been, after she passed away, we have been so detached from God. Like it happens, right? When we have something negative happening in our life, we blame God for each and everything. So that's why we also had this kind of feeling in our mind that, okay, this is happening because he is doing it like that way. So he has taken our mother from us, and he is the one who is after all these things. What have done, what went wrong, what was good. We were not at that stage mentally to evaluate it. But yeah, we were just blaming that, okay, this happened because he wanted. So along with this, we were kind of in a detachment mode from God. But then last year, probably, on the occasion of Janmashtami, we somehow visited this Radhakrishna Mandir situated at BHEL. So when we went there, there was this grand celebration going on for Janmashtami. So after completing the home deity worship and all for Janmashtami, we went there. So we saw like till then we were not aware of that this temple has been affiliated to ISKCON now, and we are having ISKCON devotees serving here. So we were in an impression that okay, still it's run by the Yadav society only. So we just went for the celebrations and for the darshans for Radha Govindev. And then we got to know, okay, then we got to know that mean Prabhuji also. And our brother Hariom has participated in various Asian Mashtami competitions as well. So he has got that prize. So that way, we have again got a kind of sun ray, or you might say that mercy of Krishna, that he's just given us a ray of hope that, okay, you guys can still join in. So that's how we got into this temple association, then devotees association, and then we got to know about ISKCON, that we have a branch over here in BHEL Bhopal. So that's how we got connected. Slowly and gradually, we have started our journey in bhakti. Since we were in a detachment mode, so it was very difficult for us to again get back into that shape, because we understand, right? When we are detached with anything, it might be anything, like some don't like wearing Western clothes, some don't like wearing traditional. So there might be many people amongst us like who used to wear Westerns and tight clothes, but now we are not in that mood because now we understand. So that kind of thing we have. So it was very difficult for us to get into that attachment again. But yes, with the help of all the devotees association, with all you blessed Vaishnavas, we got that mercy that yes, we have to increase our trust again, and we have to be in this association forever. So that's how
initially we started the chanting, then we bought one japa bag firstly for me, then slowly and gradually we bought it for the whole family. And yes, now we all are like, slowly we have started chanting. It was very difficult earlier for chanting one round, and it was like when you start taking the beat back and suddenly, oh my god, so much of sleep is coming. So it was very challenging. That's what it is said also. Like whenever you remember Krishna, firstly Nidra Devi will come to disturb you and your bhakti. So that is what happened with us also. But slowly and gradually we have kept it increasing slowly and gradually. So yeah, that's from my side. I think Mohita can take over. Any questions if anybody has from my side for me? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही डिटैचमेंट फेज से वो कृष्णा से फुली अटैच हो गई है कि आज वो सोना वाला जप कर रही है और इतने अच्छे से भक्तों का संग एंजॉय कर लिया है। तो अगर किसी के कोई प्रश्न है माता जी से तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो मोहिता माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न होंगे तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लास्ट में ले लेंगे। हरे कृष्णा। Okay, Hare Krishna everyone. So first of all, I want to thank everyone, all the Vaishnavs out there. Like because of your mercy, we are here, and because of your mercy, we are able to continue our worship of God. And ultimately, because of the mercy of Sri Krishna, we are here with all of us in association with you. So I'm very much struck about a sentence which was proclaimed by Haldar Swami Maharaj when he once visited our temple on 25th of February 2022. He said that the first foundation of the basis of spirituality is built by the good upbringing. So first of all, yes, we were attached to spirituality, but as Harshita Di said that because of the incidents that had happened in on year 2017, so we were all disattached or depressed by all the ups and downs of our lives. But yes, the upbringing which we had from our mother, our parents, was worth it, the vibe that we got. And Haldar Swami Maharaj said that यह सर्वत्रान बेस्नन्ने हस्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Like a person is perfect sage with perfect knowledge only when he is not delighted by the good fortune and neither be dejected by the turbulences of the life. So this is the thing that we should never be delighted by the good fortune. जो भी हमारे साथ अच्छा होता है वो टाइम बिंग के लिए अच्छा रहता है, बट हमको वो फॉर अ लॉन्ग टर्म ऐसा लॉन्ग बेसिस पे नहीं लेके चलना चाहिए. और सेकेंड चीज, जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है या जो भी हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ट्रिब्यूलेशंस आ रहे हैं, वो भी फॉर द टाइम बिंग है. एंड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वी विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स. तो जैसा कि दीदी ने बताया कि हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम वन राउंड. So now, by the mercy of you all, we are here and achieve the target of doing Sola Mala. Not every time. Yes, there are days when we are not able to achieve the 16 round target. And today is Ekadashi, and Hari Bol, we have completed our 16 round. And that's it. This year was full of like mystic powers relations. Like this year we all have met Amok Leela Prabhuji, we have met Haldar Swami Maharaj, we have met Mahaman Prabhuji. Like this year was full of mystic miracles and happening year. So I want to thank everyone and hope you all got the points. थैंक यू सो मच माता जी। तो सच में ये साल बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमें इतने सारे वैष्णव के दर्शन हुए। Exactly. तो कोई प्रश्न किसी के हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे सब वैष्णवी हैं तो शर्माने की कोई बात नहीं है। ओके माता जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ दोनों से
कि ऐसा कौन सा दिन है इस पूरे साल का जो आप बार बार, या कोई 3 दिन जो आप बार बार अपने मेमोरी में लाना चाहेंगी? Okay, the first day was obviously the meet with the pure Vaishnava Amok Leela Prabhuji, no doubt. And the second, I should say, the Rath Yatra. That was so grand, and this was the first time that we have attended this kind of a festival, boat festival, Rath Yatra, and yes, obviously Gita Jayanti. This was the first experience of ours of selling a Gita. गीता जयंती वाला दिन भी मतलब काफी ज्यादा इनकरेजिंग था. मतलब मैंने देखा तुलादान मैंने बस सुना था. ओके, तुलादान ऐसा होता है कि एक पल्ले पे किसी का वेट रखते हैं, फिर उसके वेट की गीता दान की जाती है. और मैंने गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं किया था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टेप डाउन ऑन द स्ट्रीट्स. लाइक मैंने कॉलेज, मेरा कॉलेज है BHEL कॉलेज, उसके सामने मैंने स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन किया मेरे भाई के साथ. एंड वी हैड अ गुड experience of all these 3 events. Hari bol. Thank you so much, Madhavi. Okay, Harshita Mataji. For me, the best experience I had was on Gaur Purnima this year. So it was like so much exciting that we have even celebrated both of the festivals, the festival of colors and the festival of flowers together. So it was a tiring day, of course, but yeah, it was indeed a very much enjoying. And as Mohita mentioned, Jagannath Rath Yatra was literally amazing. We have never been a part of Jagannath Rath Yatra. And actually, our uncle and aunt Pua and Fufaji have visited Jagannath Rath Yatra for the first time in Jagannath Puri itself. So they have literally set a flashback image for us, like you should always also visit there, and it's so grand and it's so huge. And when we bring when these Prabhujis bring those deities of Jagannath and Balbhadra and Subhadra, and they used to dance like when they come. I don't know what is it called. I just forgot that name. Forgot that phrase. So when they come dancing, and also उन्होंने ऐसा बताया कि it used to be very amazing, that literally give you goosebumps if you attend that Jagannath Rath Yatra. And we have felt exactly the same what we have in Bhopal. So when we have told them कि हमारे यहाँ भी same Jagannath Rath Yatra हुई थी, and we all were dressed in a similar pattern, and it was looking very beautiful. I would love to capture it with a drone, but actually we don't have it. So it was like these 2 days I would recognize my best and beautiful days along with the Krishna consciousness and ISKCON. Okay. Yes, Madhavi. इतना सब कुछ सुन के वो पुरानी सारी मेमोरीज पैदा हो रही हैं. Okay. So Divisha, आपका और मेरा क्वेश्चन सेम था. Next question is of Vaishnavi Madhavi. What is that one teaching from any devotee which touched your heart the most? Okay. Mohita, are you taking this question? Or I should share my experience. He mentioned that Haldar Swami Maharaj, yes, he is so experienced and so spiritually advanced master. Like I have quoted a verse from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 57. Ya sarvatran bistane hastatprapya shubhashubham nabhinandati na dveshti tasya pragya pratishtita. तो ही ऑल्सो सेट कि मदरहुड से ही आपका वो मतलब स्पिरिचुअलिटी का बेस बनता है. द सेकेंड थिंग विच ही हैज कोटेड कि आपको स्पिरिचुअलिटी का बेसिस बनाने के लिए आपको भगवान पे फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपका भगवान पे फेथ नहीं होगा, श्री कृष्ण पे फेथ नहीं होगा, तब तक आप एडवांस नहीं कर सकते. सो द स्पिरिचुअलिटी, तो स्पेस मतलब बेस बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आपको फेथ चाहिए. फिर आपको चाहिए कि आप ना ही गुडनेस से आप डिलाइटेड रहें और ना ही ट्रिबुलेशन से आप डिजेक्टेड रहें. तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए.
ऐसा भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए कि तो आपको सब कुछ छोड़ देना है. यू हैव टू बी अटैच्ड टू द मटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड डिजायर्स, बिकॉज जैसे कि हमको बोला जाता है कि हमको अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक एज अ गुड एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में कि भैया कृष्ण जो हमारे वैष्णव्स होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो ऐसे फुसड्डी से नहीं रहते हैं कि जो फेलियर्स हैं भैया कुछ नहीं तो हम कृष्ण कॉन्शियस में आ गए, हम तो संत बन रहे हैं अब. तो वी हैव टू एस्टैब्लिश अ टारगेट कि हमको भैया हमारी गुड एकेडमिक्स है, वी आर वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड पीपल, and we have that mind and ability, then only we are able to excel in our spirituality. So this was all the things which were covered by Haldar Swami Maharaj. So I should say he is a mentor for me. थैंक यू सो मच. तो हम सभी लोग ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, स्पेशली टीचिंग्स वाले. ओके, ओवर टू यू हर्षिता माता जी. For me, I have asked one question to Amoklila Prabhuji. It's like I am in my late 20s, and we have been in my family. It's like all of everywhere we are getting these things to be heard in my family about my marriage and all. So I have asked one question from Amoklila Prabhuji about what if, like, it's always advised for women and for girls that you have to be always accompanied by someone male from your family. When you are not married, it will be your father or brother. After marriage, you will be accompanied by your husband, and then in future, of course, sons. So yeah, in that case, I've asked one question like, what happened, like we all have been taught like this, that once you get married, your in-laws family will be your family, and that home will be your home. So currently it's like exaggerated as of now, that okay, the home we live in is not ours, it's just that we are living for some more days, and then we have to go for till on our place, which will be our in-laws family. So I asked this question, like what will happen if sometimes one is not getting a devotee husband, or sometimes if the husband is not so much kind, and we cannot even survive that relationship forward. So what to do in that case? What will be our step in that case? So he has literally advised so beautifully, and I've even asked that why is not brahmacharya for women as well, because when we look at brahmachari devotees, we feel so this is my feeling totally, that I feel so happy for them that they are getting so many services for the deities itself. They get to serve bhogas, they get to serve aartis, and they get to decorate the deities. And also I used to be very amazed by their services, that okay, we can also have this, we can also have a Vaishnavi ashram somewhere in temple. So I asked this question, why is not celibacy for women as well? So he advised that it's not like only by opting for brahmacharya you can be serving Krishna in a very best manner. It's very important for a girl or woman to teach the future generation, that is are going to be kids. So like our mothers has taught us, and we are advancing in our spiritual life. So he has given me that answer to my question, that you can serve Krishna by serving the upcoming generation to be a Krishna devotee. He'll be very pleased when you be giving this education to the future generation. Along with this, to the other question which I asked, like what will happen if the husband is not a devotee, or not supportive enough, and some kind of exploitation is happening or harassment is happening in the relationship after marriage. So he suggested that, of course, in that case, it is said that you have to be in your in-laws family, but when things get so opposite and work very differently for you, and it will be, if it is very difficult for you to survive over there, then of course there are some legal things like divorce and all, which we can proceed further. But yes, of course, since we are advancing in Krishna consciousness and we all are connected to Krishna, then of course this kind of thing will never happen to us. We will be having a very happy and prosperous life ahead for all of our Vaishnavis.
Thank you so much, Mataji, for your mesmerizing teachings. तो हर्षित मोहिता माता जी ने एक चीज बोली थी कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने आज एक मतलब ह्यूमरस सा स्टोरी सुनी थी गौरांग प्रभु जी से। तो वो कहते हैं कि एक बार एक संत को बुलाया था उनके यहाँ पर भागवत करने के लिए। तो वो संत आते हैं और पूछते हैं कि आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है। तो वो कहते हैं, सब लोग हाथ उठाते हैं। तो संत कहते हैं, जब आप सबको भगवान पे विश्वास है तो मेरे कथा करने का क्या लॉजिक है? मतलब अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि भगवान कौन है, ऐसा। तो फिर सब लोग बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं संत। तो सब लोग सोचते हैं क्या किया जाए, तो प्लानिंग करके बहुत मुश्किल से वापस से उन्हें बुलाते हैं। फिर जब वो आते हैं तो पूछते हैं, अच्छा बताइए, आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? तो अब सब लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि हम मना कर देंगे, तो कोई हाथ नहीं उठाता है। तो वो कहते हैं, लो बताओ, जब आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो मैं कथा करके क्या करूंगा, मैं तो चला। तो फिर सब लोग और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर उनको वापस से बुलाते हैं। फिर वो वही सवाल पूछते हैं कि आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? तो जो लेफ्ट साइड होता है वो हाथ खड़ा करते हैं, जो राइट साइड होता है वो हाथ खड़ा नहीं करते हैं। और फिर जो कथाकार होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा, जो लेफ्ट साइड वाला है ना वो राइट साइड वाले को बता दीजिए कि भगवान कौन है और भगवान पर विश्वास क्यों रखना चाहिए, मैं तो चला। तो हम देख सकते हैं कि जो आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। और सेकंड थिंग, हम बिग फोरम में है, बट जैसे कि हम मोहिला प्रभु जी ने बोला था कि हम बहुत जल्दी वैष्णवी फोरम में ट्रांसफर होते जाएंगे और गर्ल्स फोरम की जो संख्या है वो कम होती जाएगी। तो ये टीचिंग सबको बहुत अच्छे से रिमेम्बर करनी चाहिए। ओके, तो माता जी मेरा एक और सवाल है कि जब भी आपको कोई डिफिकल्टीज आती हैं, लाइक पूरे साल में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती हैं और कुछ ना कुछ हमारे अच्छे दिन होते हैं, तो जब आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप कैसे उसको डील करते हैं? For me, of course, like balancing this materialistic life along with spiritual life is like a roller coaster ride. Actually, I've never been into roller coaster, but yes, as we see in movies and we see in the serials and also, yes, balancing both the spiritual life and the materialistic life is very difficult. I just don't know how things get managed along the way. But yeah, there are so many instances where we feel so much distracted and disturbed, like, okay, how to balance all these things. Sometimes, with respect to my job, I used to be very confused what to do, what not to. There was a scenario when I have to leave my previous job. I was previously working with Tata Consultancy Services Limited from Indore. It was based in Indore, however, I was working from home from Bhopal itself. But after some years, it was getting so pathetic for me and needed a job change. But whenever you think for a transition in your life, either it is in material life or spiritual life, I will say, so there is a kind of disturbance we experience. So that transition is not always smooth and silky for everyone. So for me also, there was like for some of the time I was not getting calls, for some of the time I was not having any offers in my hand, and then I resigned from my previous company. So that time for me was like very much depressing and kind of like I was feeling very disturbed how to deal with these scenarios. So at that time, what I used to do is we used to talk. I tell each and everything to my family members, and everybody in my family used to console me. But then also there is something which pinches us deep inside, which we don't get answer for. So at times I have approached Dharmin Prabhuji also, like what to do, how to survive with these all things. So he just said me that what you have to do is you have to concentrate on your chanting. Once you will start concentrating on the name, the on the God's name, on Krishna's name, you will actually find your answers in your life. So that's what that thing has clicked in my mind, and it has been like encrypted something that whenever I feel in case of any dilemma or in case of any problem, frustration or depression, I always used to close my eyes
And the first thing which comes in front of my eyes is the deities of Radha Govind Dev. And I used to pray to them that please, please give your mercy, please shower your blessings, so that I will be able to make decisions in my life. And there are several instances also whenever I feel so feared, afraid of the things happening around. It might be a very smaller thing and it might be a very huge thing. In both of these instances, I have observed that by praying to Srila Prabhupada, it I don't know how it happens, but just for chanting those two mantras from the prayers of Srila Prabhupada, it just takes me out of those problems instantly. I don't know how it happens or not, but earlier whenever we used to go anywhere from a dark road or something, we used to chant Hanuman Chalisa fully with the full volume, that okay, now no ghost will come around us and things like that. So for all those things also I've experienced this by taking and by praying to Srila Prabhupada. Each and everything vanishes like in a moment of seconds. So this is the best thing I would share to you all. Thank you so much, Madhavi. हुआ है हनुमान चालीसा से हरसम कवच में, ये बहुत अच्छा था। और श्रील प्रभुपाद, तो सच में श्रील प्रभुपाद जी को जब भी हम याद करते हैं तो सारी चीजें बहुत इजी से हो जाती हैं। और ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि जब भी हमने प्रभु जी से कुछ पूछा है तो वो यही कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके, ओवर टू यू। Hare Krishna. So again, for me, a biggest challenge in my life is balancing between the academics, studies, and chanting, spiritual life. So जब भी मेरे लाइफ में ऐसा सोचती हूँ मैं कि काफी सारे एग्जाम टाइम, स्पेशली एग्जाम टाइम्स हो गए, सेशनल्स हो गए, तो आई थिंक कि ये मैं कैसे बैलेंस करूंगी, राउंड्स कम हो जाते हैं एंड आई पोस्टपोन द राउंड्स। मतलब 16 से डायरेक्ट 10 पे स्विच हो जाता है, वो 6 बाद में कर लूंगी। देन आई सी कि आप लोगों का साधना कार्ड, फिर मैं मतलब रात को जब मैं सुबह में जब अपडेट करती हूँ तो सबके साधना कार्ड, वैष्णवी माता जी द हाईएस्ट, दीक्षा माता जी हाईएस्ट, अनमोल माता जी, आयुषी माता जी, एंड आई एम लाइक मैं तो अपने राउंड्स कर ही नहीं पा रही हूँ। आप सब भी बैलेंस कर रहे हो एकेडमिक्स में, आप सब भी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, एंड आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो फॉर मी, अनमोल माता जी, आयुषी माता जी, दीक्षा माता जी, वैष्णवी माता जी, आप सब मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग से स्पिरिट्स हो, और आप लोगों को ही देख के मैं मोटिवेटेड होती हूँ। मोहिता माता जी। ओके, सो थैंक यू सो मच माता जी। बट इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, वैष्णवी माता जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए क्योंकि वो बहुत सिंसियर है। ओके, तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम डिवोटीज के एसोसिएशन में होते हैं तो चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, बट वो जब बुरे दिन आते हैं तो वो हैंकरिंग होती है कि यार डिवोटीज से मिलना है या वैष्णवों का संग करना है। और जब अच्छे दिन आते हैं तो फिर वो बैड डेज जो हमारे होते हैं वो सब एकदम छूमंतर हो जाते हैं, बिल्कुल उस चीज को स्मरण नहीं हुआ जाता उस चीज का। तो हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, पर उससे पहले हम इसके धर्मेंद्र कृष्ण जी को इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि वो हमको इंस्पायर करते हैं। ये जो भी सेशंस हो रहे हैं या जो भी ISKCON गर्ल्स फोरम की जो भी एक्टिविटीज होती हैं तो वो उनके मार्गदर्शन में होती है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।